When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cordlife. One chance, one choice. Hi everyone, welcome to another webinar on women health. I have today Dr. Sonam Baxi. She's gonna tell us about something on labor pain management. And I am Dr. Mandakini. I'm gonna take up how the exercises can help you in this. So Dr. Baxi is a senior gynecologist. She's a consultant in Motherhood Hospital. Ma'am, we look up to you for your kind words on the topic. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Mandakini. Thank you, Cordlife, for giving me this opportunity. I have a very interesting topic today. I'll be talking about the painless labor and the pain management during labor. So most of the patients are very scared going in labor. They prefer going for cesarean directly with this because of the pain. लोगों को दर्द सहन करने की आदत नहीं है. But in today's world, we have few technologies where we can relieve the pain. There are few things just so naturally भी pain relief होता है. So I guess I should not start my presentation. I will be mainly talking about the part of painless, that is the epidural. I need some help with screen sharing. So this is a very small presentation. I would love it to be interactive. So when a patient goes in labor, there are many ways where a patient can feel a pain relief. There are certain injections. So today we're going to talk about how you guys can have painless labor, and that is what ma'am is going to talk about. And I'm going to mention you all that how exercises can help you, in your phases of labor. You can actually use your body to get help yourself during it. Okay, I'm so sorry for the network issues. So basically what I was talking about is pain is a very subjective feeling. किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है. So there are two ways of delivering a child. It can be through a cesarean section, which is an operation, or through a normal delivery, which is a physiological method. But दोनों methods में पेन थोड़ा बहुत होता है. नॉर्मल डिलीवरी में पहले पेन होता है, सिजेरियन में बाद में थोड़ा पेन रहता है when we recover. So the truth of the labor pain is in the normal vaginal delivery, mother has to feel a pain for at least 10 to 16 hours, which is a little unpleasant sensation. Recently, it has been one of the very important and common reasons for the patients for not opting for a normal delivery and getting more motivated towards a cesarean section. आजकल cesarean section इसलिए भी करना पड़ता है because the patient wants a cesarean, they don't want to go through the pain. But with the advancement of the modern medicine, new techniques, usually हम खुद भी अपने patients को इतने पेन में रोते हुए नहीं देख पाते. So it is usually considered inhuman अगर आपको पेन रिलीव नहीं करता. So for the last 20 years, it's usually Western countries and even into India, painless normal delivery has been carried out. So painless delivery refers to the use of an epidural injection. एक छोटा इंजेक्शन होता है which is given in the back of the patient. It is an epidural space. Basically spine से just पहले वाला एरिया होता है which is an epidural space.
उसमें एनेस्थेटिस्ट एक नीडल डाल के दे लीव अ स्मॉल वायर जिससे वो लोग ड्रग्स देते जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पेशेंट को जो पेन है वो फील नहीं होता। पेन इज देयर, द कंट्रैक्शन इज देयर, द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर इज देयर एज इट इज, but the patient does not feel the pain. So it is injected in the lower back with a plastic tube placed inside with drugs released around the spinal cord. The fine plastic tube is then taped onto the back of the patient and the medicine. नीचे से वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तुम आप हैंडल कर लेना, मैं तुम्हें डॉक्टर सोनम बख्शी मैडम का नंबर भी भेज रहा हूँ। Mute yourself. Everyone, please mute yourself. It is injected only once when you are in active labor. एक ही बार वो नीडी डलेगी, उसके बाद आपको उसका टॉपअप्स मिलेगा। आई एक्सप्लेन व्हाट द टॉपअप्स आर। सो यूजुअली गिवन, अब ऐसा नहीं है कि एपिड्यूरल आपको थोड़े से पेन में हो जाएगा या जस्ट पेन स्टार्ट हो रहा है यू हैव द एपिड्यूरल। You need at least 3 contractions in 10 minutes, which is called an active labor. आप एक बार एक्टिव लेबर में जाते हो तो भी आपको एपिड्यूरल मिलता है। So एपिड्यूरल देने की 2 पोजीशन होती है। It can be inserted by the patient sitting on the bed with the back towards the anesthetist, or the patient lying comfortably एक साइड करवट लेके और पीछे से anesthetist उसको नीचे डालता है। However, the patient is comfortable, but commonly patient को बिठा के दिया जाता है। It takes at least 15 to 30 minutes. ऐसा नहीं है कि जस्ट एपिड्यूरल डल गया और वो आपको काम कर दिया है। एटलीस्ट 15-20 मिनट, 30 मिनट्स, आधा घंटा हम पेशेंट को देते हैं। टू बी ऑन द सेफ साइड वी से कि आपको 40-45 मिनट्स लगेंगे फॉर इट टू वर्क। Because it also depends on the initial pain, कि पेन कितना है, the time the medicine takes to work, तो वो सब वेरिएबल होता है। एपिड्यूरल हर फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि 2 कारण होते हैं। एक, एपिड्यूरल के लिए आपको स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट चाहिए, एपिड्यूरल के लिए एपिड्यूरल का सामान चाहिए। दूसरा, यू नीड थ्रू आउट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सो यू नीड गुड लेबर नर्सेस, गुड junior doctors, good doctors around. Then you need an anesthetist to be there throughout अगर जब आपको एपिड्यूरल लगा है। So it is usually possible in bigger settings. रूरल बोर्डिंग फैसिलिटीज में एपिड्यूरल नहीं पॉसिबल होता है। समटाइम्स आफ्टर एन एपिड्यूरल आपको नीचे पैर में एक अजीब सा सेंसेशन लगता है। समटाइम्स यू फील दैट यू डोंट फील, या किसी किसी को हर ड्रग का अलग अलग सेंसेशन आता है। How much you are able to move your leg will depend upon the local anesthetist, local anesthesia the anesthetist has given in the epidural. ये जो थिन ट्यूब है वो अंदर ही रहेगी, उसको वहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपको पेन रिलीफ की जरूरत है। उसमें एनेस्थीसिया डालते जाएंगे, ट्यूब विल बी रिमूव्ड। सम पेशेंट्स प्रेफर कि आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी या अगर उसके सब सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद निकाल दिया जाए। Keep it for 1 more day so that the patient is pain free. Now what is top-up? I will talking about top-up. So epidural का फंडा ये होता है कि वो एक बार में पूरा पेन रिलीफ फील करता है। It works for 1 hour, 2 hours, 3 hours, depending कि कितना अपन ने ड्रग दिया है। उसमें बार बार ड्रग्स डालने पड़ते हैं। तो ये जो ड्रग डालने का फंडा होता है इसलिए हम टॉपअप देते हैं। आप यूजुअली सुनेंगे जब भी आप पेपर में जाओगे, अगर आपको एपिड्यूरल लगेगा आपको डॉक्टर्स बोलते जाएंगे कि इसको टॉपअप कर दो, टॉपअप कर दो, टॉपअप कर दो। सो टॉपअप मतलब यही होता है कि आपको और ड्रग देना ताकि आप पेन रिलीफ। टॉपअप 3 टाइप से दिए जाते हैं, या तो आपके डॉक्टर आके एक इंजेक्शन लगा के आपको टॉपअप दे देते हैं, या फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन लगा हुआ है आपके ऊपर। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में ये प्रॉब्लम होता है कि आप मूव अबाउट नहीं कर सकते, या फिर आपके पास एक बटन है जिसे आप पुश करोगे तो फिर आपको पेन रिलीविंग एनेस्थीसिया इसमें मिलेगा। यूजुअली थर्ड ऑप्शन हम चूज नहीं करते हैं बिकॉज उसमें फिर पेशेंट्स बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया ले लेते हैं। सो एपिड्यूरल कैन बी स्ट्रॉन्ग, कैन बी माइल्ड। सो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी में हम माइल्ड प्रेफर करते हैं बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में आपको थोड़ा पेन अगर फील हो तो अच्छा रहता है। स्ट्रॉन्ग
हम देते हैं जब आपको सिजेरियन करना रहता है, यू शुड नॉट फील एनीथिंग, आपको कोई सेंसेशन नहीं होना चाहिए, आपको कट कर रहे हैं, बेबी डिलीवर करा रहे हैं, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. सो स्ट्रॉन्ग एपिड्यूरल करते हैं व्हेन आपको सिजेरियन करना पड़ता है. A normal labor does not require strong block, so a lower strength anesthesia is preferred. This allows you to feel mild contraction and sometimes जब भी आपको pushing effort चाहिए रहता है, it allows you to push also. Now, what are the advantages of epidural? So it is a very effective form of continuous pain relief, especially for backache and contraction pains. You can be awake, आप जगे हुए हो, आप खेल सकते हो, चल सकते हो. You can participate in your baby's birth basically. It requires less medicines than other forms of pain relief. It does not make you sleepy. It's not like general anesthesia where you are sleepy. If needed, a stronger epidural can be used for cesarean section. It is important to understand that while you will be pain-free during the operation, you may feel some pressure sensations, and to avoid general anesthesia wherein you are in very deep sleep, where you don't know anything, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, you cannot feel your baby, and recovery time is longer. So there are certain disadvantages of epidural. Sometimes it is slow in second stage of labor. मतलब कि आपका जो पुशिंग एफर्ट्स है वो थोड़ा कम होता है बिकॉज यू डोंट फील द पेन, तो आपको डिलीवरी में टाइम लगता है. You may more likely end up in vacuum extraction of your baby. That is just because of the same reason कि आपको पेन फील नहीं हो रहा है. You might not push the way you should. जिस कारण से वैक्यूम लगा के we might help to pull your baby out. हमें जब भी एपिड्यूरल देना होता है हमें आपको थोड़ा प्रीलोड करना होता है. प्रीलोड मतलब कि वी हैव टू गिव यू सर्टेन फ्लूइड्स बिफोर दैट और थ्रूआउट द एपिड्यूरल सो दैट आपका पीपी फॉल नहीं हो. तो एपिड्यूरल में यूजुअली आपको एक आईवी ग्रुप चलता रहता है. Once the epidural is in place, it is very important that you do not lie very flat. मतलब थोड़ा सा proper positioning या थोड़ा करवट देके you may sit up or lie on the side. That's because it is to prevent low BP. One thing which people should know and should be aware of, it doesn't always provide 100% pain relief, but it substantially reduces the pain and sensations in the lower half of the body. हमें 100% पेन रिलीफ नहीं चाहिए रहता है. अगर 10 to 100 के स्केल पे आपको पेन आ रहा हो तो यूजुअली आपको जितना भी पेन आए आप 10 या 20 पे रहते हैं. इट इज अ कंफर्टेबल फीलिंग ऑफ पेन. आप अगर 80 पे भी हो तो आपको 10-20 का पेन अगर फील होता है तो यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. इन अर्ली लेबर जो जल्दी यूजुअली कैन नॉट गिव एपिड्यूरल. उसमें आपको अदर मेथड्स ऑफ पेन रिलीफ यूज करना चाहिए लाइक वार्म शावर्स, मसाज, एक्सरसाइजेस, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स व्हिच कैन बी गिवन. 50 side effects which are there. So every anesthesia has a risk of side effects and complication. While they're usually temporary, some may be long term. बट ये सब किस पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स कि अगर आपको कोई और अदर इलनेस है, इफ यू हैव हाइपरटेंशन, अगर बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, उन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल फैक्टर्स लाइक इफ यू आर स्मोकिंग, अगर आपको स्मोक करते हो, आप ओवरवेट हो. ओवरवेट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर. ओवरवेट पीपल में एपिड्यूरल लगना इज वेरी डिफिकल्ट. उनका स्पाइन एरिया फील करना डिफिकल्ट होता है, वहां तक नीचे तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है. अनकॉमन साइड इफेक्ट्स. अनकॉमन मतलब कि वो चीजें जो आप यूजुअली एनकाउंटर नहीं करते. 1 in 1000, 1 in 500 पीपल, 2-3 साल में एक आध बार आपको मिलता है. लाइक फीवर, कभी कभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है. There can be severe headache when you lie down. Now, please note my point. Headache is an uncommon side effect. मैंने लास्ट 3 साल में एक पेशेंट को हेडेक देखा है सिर्फ एपिड्यूरल के बाद. आई गेट दिस क्वेश्चन वेरी कॉमनली कि उसके बाद हमें हेडेक होता है, उसके बाद हमें टारगेट होगा. सो नो, headache does not happen with epidural. It is a very uncommon side effect and very unfortunate side effect. But it is temporary
Anesthetist will assess you and it will be fine. With temporary nerve damage, you cannot see nerves, you cannot see nerves. कभी कभी तो आपकी नींद अंदर जाती है, वो टेम्परेरी किसी नर्व को अगर कंप्रेस कर रही है या उसने डैमेज किया है तो आपको थोड़ा पेन से नीडल सेंसेशन आएगा, वीकनेस हो जाएगी लोअर बॉडी में. ये फ्यू डेज फ्यू वीक्स लास्ट करती है, वो ठीक हो जाती है जैसे जैसे आपकी नर्व रिकवर होगी. नाउ दिस साइड इफेक्ट nobody can avoid because आपको नॉर्म नहीं दिखती है. There can be overdose of medicine sometimes. Now this is what I was talking about कि लोग इतना कभी कभी पेन करते हैं कि हम भी उनको मेडिसिन देते जाते हैं. कभी कभी वो ओवरडोज हो जाता है, उनकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, उनको ऑक्सीजन लग जाता है. Sometimes the anesthetic does not fully work. कभी कभी वो जब नीचे वायर जाता है आपके एपिड्यूरल स्पेस में, वो कहीं किंक हो जाता है, किसी चीज से दब जाता है, तो फिर वो ब्लड नीचे नहीं जा पाता है, जिस कारण से भी कभी कभी वो एनेस्थीसिया वर्क नहीं करता है. समटाइम्स पीपल में फेस सम एलर्जिक रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द ड्रग्स. There can be existing medical conditions which can make them worse. So there are certain contraindications. Contraindications are those conditions जिसमें हम epidural नहीं दे सकते हैं. So you have to talk to your anesthetist if you have either of the following contraindications. अगर आप blood thinners दे रहे थे जैसे कि warfarin, so usually blood thinners are very commonly given in pregnancy, in high risk pregnancy, especially in our setting. Not warfarin, of course. Ecosprin देते हैं, Lomipin देते हैं, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर मेथैडोन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेगनेंसी सेफ रखने के लिए, स्पेशली आपको कोविड ये चीजें और बढ़ गई हैं. So you have to tell your anesthetist कि आपको ब्लड थिनर्स लग रहे थे. अगर आपका ब्लड थिनर 24 घंटे पहले बंद हो चुका है तो there is no harm in giving epidural. और आपने उसी टाइम पे अगर आपका ब्लड थिनर दिया है तो you cannot give the epidural. If you have a blood clotting problem मतलब जब आपको लगती है तो आप जब भी आपकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है. If you are allergic to some local anesthetic, if you have a deformity in spine, आपका spine थोड़ा टेढ़ा है, you have a known complication in your spine, you have to discuss it with your anesthetist. If you have an infection in your back, तो किसी किसी को TB spine होता है, किसी किसी को myelitis होता है, कोई spine का infection होता है. अगर वो भी है तो you have to tell us. If you have had any previous surgery of the spine with metal in the back, आपको spine fracture हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, or if you have had any problem with the spinal anesthesia or epidural anesthesia in your previous pregnancy, ये सब अगर होता है तो you need to tell the anesthetist so you will look after it. Now, usually I ask my patients, how was your experience while delivery, with epidural, without epidural? Frankly, there are only 1% of patients who deliver without epidural in our setting. 99% people deliver with epidural. Nobody is ready to bear the pain. We cannot see our patients in pain. We usually ask our patients to take epidural. Some do take it. There are few people जिनके अंदर ये अभी भी myth है कि हम epidural ले लेंगे तो बैक हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा. You have to be very clear. आपका नॉर्मल डिलीवरी होना नहीं होना आपकी पेनलेस पर नहीं डिपेंड करता है. अगर होनी होगी तो विद पेनलेस भी हो जाएगी, विदाउट पेनलेस भी हो जाएगी. अगर नहीं होना होगा, कुछ प्रॉब्लम आना होगा तो it does not depend upon your epidural. It is just to make you comfortable. So every woman has a very different birth experience and a unique experience, and the need of pain relief varies. So thinking about and understanding the choices of the pain relief are an important part of getting ready for the birth of your baby. I always take a labor counseling for my patients, and you should also ask your doctors before entering your 38th week or before entering your time of labor कि आपके पास क्या मतलब पेन मैनेजमेंट की चीजें अवेलेबल है.
what is your birthing plan, how do you want to get delivered, if you have some particular plan in your mind, कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, you should always discuss it with your doctor so that they can note down कि आपकी क्या preferences है. During the actual, no matter what you decide during the actual birth process, your need for pain relief may change. So, always have a flexible attitude towards the birthing experience, which makes it more comfortable. There are some other options which are available for pain relief. Some patients want to avoid taking medications. There are non-medical choices like exercises, massages, work bath, shower, yoga, walking, relaxation techniques. Sometimes the pain is worse than expected, or maybe the labor is not progressing as it should. So this is where the medical pain relief option can be used. Then there is a nitrous oxide gas, and other strong pain relieving actions. So basically, my only point of taking this class is I want you people to be very open about epidural, talk to your doctors about epidural, understand the process, and have a flexible attitude towards your delivery, make a nice birthing plan, and go ahead with it. Thank you. Thank you so much for this nice information, ma'am. Hello. Thank you. Yes. And rightly said that every woman has a different experience. Ma'am, there is one question which usually I am an antenatal therapist, so mothers come and ask me, and they have this fear that epidural, if they take epidural, they will have back pains after delivery. And sometimes cesareans also come and say that this is, happened to me, back pain is happening because of the epidural. Then we really have to convince them. I would really like you to enlighten us on this. Yes, Dr. Mandakini, that's a very common question. I come across that question almost on a daily basis. So, मैं एक चीज clear करना चाहती हूँ कि back pain is not because of the epidural or spinal pain. You anyways are going to have back pain because of your postural defects. So, जब आप pregnant होते हैं, आपकी tummy बढ़ती है, आपका spine का जो shape है, I think Dr. Mandakini will tell it better, वो change होता है. फिर जैसे ही आप डिलीवर होते हो, it tries to come back. आप बैठते हो, फीड कराते हो, आपका पोस्चर अलग रहता है. Your back muscles are not very strong. Indian ladies anyway don't exercise much. उनको कितना भी बोल लो कि आप exercise कर लो, back stretching कर लो, they are not allowed to even pick up things अगर जो नीचे गिर जाती है. आप झुक नहीं सकते हो, आप बैठ नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते हो, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो. So I had a patient at 5th month asking कि मैम हमने सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ. तो मैंने बोला मैम तुझे 5 महीने पहले भी कहाँ मना किया है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ. She not question also. So इसीलिए we make our back muscles so stiff that they are so weak कि वो इस जो change हो रहा है spine में, जो postural change हो रहा है, जो आप पूरे दिन बैठ के फीड करा रहे हो, उससे भूल नहीं पाता है, जिस कारण से आपको बैक पेन होता है. बेचारे एपिड्यूरल एंड स्पाइनल का इसमें कोई रोल नहीं होता है. Right? Thank you so much. I always have to tell them, enlighten them and tell them this is no roles, so I have to work as a team with the doctors and tell them this is not happening. You have a weak core. Today we're going to deal about how to strengthen this core, because when that muscle is weak, it is then when your back is going into instability. Injection laga ho chahe na ho, back is बहुत ही common है. So it really takes hard, to explain them, take this fear off. So thank you so much for this. I'll be opening again once we have question answers round. So we'll be needing you again. Thank you so much, ma'am. I think somebody can make me the presenter. Yeah, I got that. Thank you. Is my screen visible? Is my screen visible? Yes, ma'am. Thank you. So, hi everyone, I'm Dr. Mandakini. I am a physiotherapist by profession. I'm internationally certified pregnancy fitness educator and an internationally certified Pilates instructor. I'm a lactation counselor and a manual therapist. Okay, so today we're going to deal about that, what exercises we can do during different phases of labor. The 3 phases of labor we're going to talk about, and when and how you can help your, your body can help yourself
to deliver the baby out. So, you know, we're going to deal about those exercises because labor is a natural process. It is a normal process wherein your body is preparing the baby to exit out of your body now. So there are contractions that your uterus is going through. We're going to deal with how we can enhance these contractions and help the baby push further down. So before starting, let me just mention you there are certain changes that happen in pregnancy. As ma'am rightly said, you know, there are certain postural changes that they happen in the pregnancy. So we're going to deal about, I'm going to talk today about musculoskeletal here. So what happens is when you are, you know, when you're pregnant, your body, you know, if you can see the lady in the picture, her tummy is protruded forward. Now, when her tummy is protruded forward, there's something called a center of gravity. The center of gravity is like if this is a bottle and it is stable on the floor. That means center of gravity is falling exactly from the middle. Now, anytime when anything is shaky like this, that means center of gravity is not from the center, like a ball. Now, what happens? For making you stable on the floor, this is a natural process of your body that it will pass directly from the center. Now, when the tummy has protruded, obviously your center of gravity has changed because your mass, your dimensions have changed. Now, to make yourself stable, the center of gravity slightly shifts. Otherwise, it falls exactly from your spine. So it is from the sacral segment, जहाँ पे आपका hip start होता है और lower back खत्म होती है, वहाँ के आसपास center of gravity निकलता है. लेकिन जब आपका पेट बाहर आ जाता है तो उसकी वजह से center of gravity हिल जाती है और उसी की वजह से आपका posture बदलता है क्योंकि end of the day आपकी body ऐसे center, high center ऐसे trained है कि उसको आपको stable रखना है because आपने चलना है stably. ना इसकी वजह से क्या होता है आप अपना posture चेंज करते हो ताकि आप स्टेबल रहो. Why also this posture is changing? This is one reason. Now second reason is जब आपका एब्डोमेन बाहर जा रहा है इसका मतलब आपकी एक मसल होती है जो कि कोर मसल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. तो वो जो कोर मसल होती है उसका काम होता है आपको सीधा खड़ा रखना, स्टेबल रखना और आपकी स्पाइनल जो कर्वेचर्स है यूजुअली ऊपर से सी कर्व आता है, बीच में ऐसे कर्व आता है और फिर नीचे सी कर्व आता है. इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका जो सी कर्व होता है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है क्योंकि एक्स्ट्रा लोडिंग होती है, कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, कुछ मसल्स एक्स्ट्रा लूज है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अफेक्टेड है. आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप कैसे अपने बैक पेन्स को ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी बचा सकते हैं. उसके बारे में I'll give you a small hint क्योंकि जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी उसमें ये मसल भी इंक्लूडेड है और एनीवेज आपको बैक पेन होता है तो अगर आप अभी से करते रहेंगे तो आपको जो इंड्यूस लेबर पेन इंड्यूस से पहले भी जो बैक पेन्स होते हैं इवन आप उससे भी बच सकते हैं. आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो इफ यू गेट अ बैक पेन यू कैन ऑल्सो सेव योरसेल्फ आफ्टर दैट, राइट. So now what I was talking about is कि जब आपकी मसल बाहर निकली इसका मतलब आपकी कोर मसल जो है वो वीक होती है जिसकी लैक्सिसिटी होती है, you know it has to stretch forward. तो जब वो बाहर निकलती है वो it is getting weak because relaxing hormone आपके अंदर रिलीज हो रहा है जिसका काम है आपके मसल्स और जॉइंट को रिलैक्स करना. ये एंडोक्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से या फिर रिलैक्सिंग हार्मोन भी एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में निकलता है. तो ये प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है ताकि आप आसानी से आपका पेट खोल सके, आपका बच्चा नीचे आसानी से, पेल्विस भी डायलेट होती है तो आपके जो बोन होते हैं, जो वेस्ट की जो बोन होती है वो भी खुलती है क्योंकि बच्चा बाहर निकलने के लिए टनल में से पैसेज चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें निकलती हैं. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. आपका जो साइज है बच्चे का जब आप थर्ड ट्रिमेस्टर में हो, ऐसा सोचिए कि एक वाटरमेलन है, उतना बड़ा बच्चा आपके अंदर है ड्यूरिंग योर 40 वीक्स. ना इतने बड़े बच्चे को, इतने सर्कमफरेंशियल बच्चे को आपने बॉडी से बाहर निकालना है फ्रॉम दैट स्मॉल प्लेस, यू नो. तो उसके लिए डायलेशन जो होता है आपकी बॉडी का, इधर वो 10 सेंटीमीटर या 3 फिंगर्स डिस्टेंस जब तक नहीं खुल जाता तब तक आप डायलेशन जब तक नहीं हो जाती है तब तक आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते. इसी के लिए उस दौरान आपको कई बारी इंडक्शन दिया जाता है पेन्स के लिए. अब हम जो आज बात करने वाले हैं, आप कैसे, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, पहली चीज आप कैसे पता करोगे कि आपको सही कॉन्ट्रैक्शन है या झूठा कॉन्ट्रैक्शन. इट इज अ ट्रू और इज इट अ फॉल्स लेबर. फॉल्स लेबर का हम दूसरा नाम ब्रैक्सटन हिक्स भी बोलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज जो ट्रू लेबर आपका होगा वो एक सिमेट्री होगी. इट विल बी लाइक अ साइनस कर्व, ऑलराइट. इट विल कम, it will go down and then again it will rise up and then it will go. It's like a sinus wave. उसमें continuous frequency होती है, continuous width होती है.
जिस पीरियड में टाइम इंटरवल में वो बार बार आ रहा है। एंड देन उसके अंदर आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि अभी आया ब्रैक्सोनेक्सिस लाइक अभी पेन हुआ फिर पूरे दिन में पेन नहीं हुआ, राइट? आपने मूवमेंट बदला, उसकी वजह से आपको पेन आया और आपने मूवमेंट चेंज कर दिया तो पेन चला गया। सो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि आप ट्रू लेबर में है या एक्टिव लेबर में है, फॉल्स लेबर में है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज पीपल गोइंग टू पैनिक ऑफन। So what happens is, this is, you can take it as a one rule जिसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है अब मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो इफ आई गो विद इट, आपको रेगुलर इंटरवल्स में होगा और जो पेन होगा इट विल बी लाइक अ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। हाउ इट हैपेंस कि आपके इनर थाइज में पेन जाएगा, आपके बटक्स में पेन होगा, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होगा और आपके लोअर बैक में पेन होगा। दीज आर द बेसिक एरियाज जहां से पेन स्टार्ट होता है, राइट? एंड ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में आता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन जो पावर है कॉन्ट्रैक्शन की, पहले धीरे धीरे आएगा, फिर जैसे जैसे बच्चा नीचे आता जाएगा, बॉडी और प्रिपेयर करती जा रही है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इवन जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो जाता है एक वेव से दूसरी वेव के बीच में, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं 511 रूल है जो हम यूजुअली पेशेंट्स को समझाने के लिए बताते हैं। दो वेव के बीच में लाइक इफ द वेव इज कमिंग, सो व्हाट विल हैपन इज 5 मिनट के गैप में पहली वेव आपकी अभी आई, तो दूसरी वेव 5 मिनट के गैप में एक और वेव आई, ओके? एंड दिस काइंड ऑफ, फिर 5 मिनट के बाद में तीसरी वेव आई, फिर 5 मिनट के बाद में चौथी वेव आई। ये 1 घंटे तक चलता है एंड एवरी आवर, मतलब दिस रिपीट्स एवरी आवर। सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन कि ये सिंक्रोनाइजेशन है। अगर एक सिमेट्री फॉलो हो रही है कि कॉन्ट्रैक्शन 5 मिनट के लिए आ रही है, 1 मिनट तक रह रही है और 1 घंटे में बार बार ये चीज हो रहा है या 1 घंटे में ये प्रोसेस चल रहा है, दैट इज व्हेन यू आर इनटू अ ट्रू लेबर। एंड तब आपको समझ आता है कि हाँ ठीक है मैं लेबर में हूँ। फिर आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट ने जो भी आपको चीजें बोली होती है करने के लिए, आई मीन दे गिव यू व्हाटएवर दे हैव गिवन यू, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे आगे का प्रोसेस है, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट प्रोसेस। अब 3 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं, 1, 2 एंड 3। ना आपका जो काम जो मैं आज बोलने वाली हूँ 1 और 2 में है, 3 इज कम्प्लीटली योर डॉक्टर्स जॉब। जो गायनेकोलॉजिस्ट उनका काम है जो आपका प्लेसेंटा निकलता है उसको निकालना। फर्स्ट में क्या होता है, आपका अभी सर्विक्स डायलेट होना शुरू हुआ है और जैसा कि मैंने कहा जब तक वो 10 सेंटीमीटर या 3 फिंगर डायलेशन नहीं हो जाती है तब तक यू आर नॉट सेट टू गो इनटू द सेकंड स्टेज, वेयरइन वो बच्चे को बाहर निकालने के प्रोसीजर में आपको लेके जाया जाता है। नाउ आपका काम जो स्टेज 1 है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर इसको बोलते हैं। आपके अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस जो मैं आपको आज थोड़ी बहुत सिखाऊंगी, आप वो एक्सरसाइजेस करते हुए आप उनको कैसे कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ा सकते हो और बच्चे को ग्रेविटेशनल पुल के साथ और नीचे धक्का मार सकते हो ताकि डायलेशन और फास्ट होती शुरू हो जाए, राइट? सेकेंड हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे अब जब आपका बच्चा नीचे आ चुका है, you have been taken into the delivery room, labor room, and you have been asked to push. Now how you will help and use your core muscles? अब आपका काम एक्सरसाइज का नहीं, अब आपका ब्रीदिंग का काम आ जाता है, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप थके नहीं। आप अगर आपने 3 Idiots देखी है तो जो आप मोना सिंह का लास्ट ऑन द टेबल टेनिस टेबल व्हेन शी स्टार्ट्स डिलीवरिंग एंड आमिर खान इज ट्राइंग टू डिलीवर द बेबी आउट, तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है। आप उस एग्जॉशन फेज में ना जाएं, उसके लिए अपने आप को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो पेन होता है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो होता रहेगा और जल्दी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब बच्चा नीचे आ रहा है। आप ना थके उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगी। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप स्टेज 1 में भी करेंगे और आप स्टेज 2 में किस तरीके से करेंगे, आप अपने एब्डोमेन का फोर्स किस तरीके से बच्चे को पुश करने में लेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। थर्ड फेज में आपका कोई काम नहीं है, वंस यू डिलीवर द बेबी आउट, रेस्ट इज योर डॉक्टर्स जॉब। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ पेन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब फर्स्ट फेज ऑफ लेबर है तो आपको क्या हो रहा है कि पेट में आगे दर्द आ रहा है और पीछे दर्द आ रहा है। जैसे जैसे आप सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जाते जाते हैं, लेट स्टेज ऑफ लेबर में जाते जाते हैं, तब आपका पेन इस पैटर्न में आना शुरू हो जाता है एंड दैट्स हाउ। एंड जो लेट स्टेज होगा, लेट फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें आपका पेन
काफी ज्यादा होगा अराउंड द एब्डोमेन, which really goes later to the legs. Now coming to this hormones and labor pain, this is very important. What happens is you have a hormone which is adrenaline, flight and fright. These are the things which happen. अब जब आपका flight होता है, so what happens in that is, am I visible? Yes, ma'am. Yeah. So जो आपका हार्मोन होता है which is adrenaline, and आपकी बॉडी में दूसरा हार्मोन है which is oxytocin and endorphins, right? So what happens in here is आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं which are released. अब अगर आप टेंशन में जाते हो, अगर आप फियर में जाते हो, या आप उसमें चिल्लाते हो, आपका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस पीरियड में आपका फाइट और फ्लाइट which is adrenaline that is released. अब जब वो रिलीज होगा तो आपकी बॉडी और टाइटनेस में चली जाएगी. अब अगर वो टाइटनेस में चली जाएगी, एक तरफ तो हम डायलेट होने का वेट करें कि बच्चा नीचे आए. अब अगर आप उसको टाइट कर लोगे तो बच्चा नीचे आएगा कैसे? ऑलराइट, तो आपको इसके लिए एड्रेनलिन को ना निकालते हुए ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स को ज्यादा निकालना होता है, such that you can deliver normal. Now oxytocin and endorphins are also called as good hormones or love hormones. That is why I always say that a spouse, because a woman gets these hormones released with the spouse touch more. So I always say कि जब भी आप लेबर पीरियड में हैं, आपका स्पाउस आपके साथ जरूर हो. और जो भी मैं टेक्निक्स बता रही हूँ आपको कोई भी दे सकता है, आपकी मदर दे सकती है, आपकी सिस्टर दे सकती है, whosoever can give it. But if a spouse gives, that gives a better better secretion of these hormones. So that is how it can help you and it can makes you relax. आपका पेन सेंसेशन भी हेल्प करता है रिलीज करने में, and that is how it helps. ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन है, वो हार्मोन आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ाता है. सो वो भी आपको इस्तेमाल कर, वो भी अगर आप उसको रिलीज करने में हेल्प करेंगे, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट rid of your labor pain and also makes the contractions easier and gets the baby delivered out. I've had several females. There was a female who came to me in 39th week और तब तक उनका बच्चा नीचे नहीं आया था, and she was very much worried कि मेरा बच्चा डिलीवर कैसे नॉर्मल होगा, बिकॉज वो मेरे पास बैक पेन के लिए आई थी. हमने उनका बैक पेन ठीक कर दिया, बट वो रेगुलर नहीं थी एक्सरसाइजेज में, जिसकी वजह से उनका बच्चा पेल्विक रिम तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचा था. Now 39th week and we had to deliver her out. So I asked her to come to me just for 1 week and she delivered normal, and that too she delivered within a labor period of 3.5 to 4 hours. So exercises and pain relief techniques और scientific techniques आपको इस हद तक हेल्प करती है कि आपका लेबर पीरियड भी शॉर्ट कर सकती है. ऐसी भी फीमेल्स आई हैं मेरे पास जिनको लेबर पेन ही नहीं महसूस हो, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज लेबर पेन. They just came, they did the exercises, they were doing exercises and they went to the gynecologist. उनके पास गई and gynecologist, you're dilated. And they were immediately shifted to the room and they delivered. So it is very interesting if you are exercising in a scientific way with a supervisor जो इसमें trained होते हैं. आप उनको exercise में help ले सकते हैं और अपना लेबर पेन कैसे कंट्रोल करना है वो समझ सकते हैं. ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का एक और तरीका होता है जिसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का एक और तरीका होता है जो मैं यूजुअली मदर्स को भी बोलती हूँ. They can take it from their husbands. When you massage your breast, when you get, your spouse can help you massage the breast and around the nipple area. That helps to release oxytocin. But ये आप जब आपका full term हो जाएगा उसके बाद ही start करें, because उसके पहले आप early premature labor में जा सकते हैं, because oxytocin जैसे मैंने आपको बोला it is required for कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर यूट्रस. अब अगर आप पहले ही यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, बॉडी को गलत सिग्नल देंगे कि बच्चा बाहर निकालना है, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम. So if you want oxytocin release in your body, you can go with your breast massages through your spouse, and as I said, because spouse जब करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर हार्मोनल रिलीज होता है, because it is taken as a affection hormone. Now coming to next, the relaxation during labor. Now what happens is, during this period, जब आप labor phase में होते हैं, so आप काफी ज़्यादा stressed होते हैं. Now there are two pictures which are shown in here.
एक में द लेडी इज लिटरली शाउटिंग. हमने मूवीज में देखा है जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो फीमेल लिटरली शाउट्स एंड दैट्स व्हेन शी शी इज डिलीवरिंग. बट व्हाट वी से इज जब आप शाउट करते हैं या जब आप चिल्लाते हैं तो आपकी जॉ मसल्स टाइट होती हैं and your body is so connected that when you shout or you scream, आपका जो pelvic floor का जो मसल है, जैसे कि मैंने कहा, this makes you release adrenaline hormone. आप टेंशन में जा रहे हैं, आप पेन महसूस कर रहे हैं, आप फाइटिंग रिस्पॉन्स में जा रहे हैं. जब भी आप फाइटिंग रिस्पॉन्स में जाएंगे आपकी बॉडी में हार्मोन एड्रेनलिन रिलीज होगा जो कि आपको और टाइट करेगा. तो जब आप चिल्लाते हैं, चिल्ला के डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं कि आपसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस टाइम पे rather than pushing the baby out and helping yourself, आप प्रॉब्लम क्रिएट करें क्योंकि pelvic floor और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और टाइट हो रही है. So it is always suggested कि आप नॉर्मल ब्रीथ करिए, जो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है, and that is how you should deliver the baby out. For a small practice, everyone here can make a strong scream. आप जोर से चिल्लाइए and then feel what is happening inside. I'll give you 1 minute, few seconds to do that. Make a great big shout, make a good noise, tense your muscles and feel what is happening down there. Right? So जब आप ये करते हो तो आप फील कर सकते हो कि नीचे की मसल्स बहुत टाइट होती है. So इसलिए you should always deep breathe and that's how you're gonna push. I'll show you how. Now, another thing that I usually tell my patients is, when you are delivering, when you're entering the room, जब आप रूम में जा रहे हो, आपको डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हैं, एक्टिव फेज में आप हो, आपको एडमिट करें, आप पेन में हो, तो क्या है कि एंडोर्फिन, जैसे मैंने आपको बोला, ऑक्सीटोसिन जो मैंने आपको बताया, जो आप कैसे आप रिलीज करवा सकते हो बाय योर टच ऑफ योर स्पाउस, massaging around the breast, that can help you release oxytocin. Another thing is endorphins, which are also called as good hormones. ये usually exercises करने पर भी release होते हैं. उसी तरीके से जब आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, कोई अच्छी फ्रेगनेंस सूंघते हैं, उस दौरान भी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो आप अपने साथ कोई ऐसी अपनी ब्लैंकेट लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा कपड़ा लेके जा सकते हैं जिसकी आपको खुशबू अच्छी लगती है, कुछ अच्छा म्यूजिक जो आप सुनना पसंद करते हैं, कुछ चैंटिंग्स रख सकते हैं, ओम का चैंटिंग या कुछ भी ऐसा प्ले कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और यू कैन प्ले इट ऑन योर हेडफोन्स एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली हेल्प योरसेल्फ रिलीज this problem. Music therapy is one of the best therapies. I'm a neuro specialist also. मैं एक न्यूरो के पेशेंट्स, जो आपके स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत टाइट पेशेंट्स होते हैं, उनकी मसल टोन भी अगर आप म्यूजिक थेरेपी चलाते हैं तो आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स होता है. दैट कैन हेल्प यू रिलीज योर मसल टोन. सो इट इज दैट वेरी इफेक्टिव. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज रोल ऑफ द पार्टनर. This is what I want to talk about. This is where I was telling you that you can help the woman release more of oxytocin, you can help the woman release more of endorphins, and that will help her release the pain. All right? जो मसाज की बात मैडम कर रही थी, इसमें भी, this is what we call as the birth massage, and we do it during the pain period. So what you can do is you can expose the area. You can give a good massage around the shoulders in this direction. Okay, so this is how. So what you'll do is you'll rub your hands such that there is warmth. आने वाले वक्त में सर्दियाँ आ रही हैं तो obviously आपके हाथ ठंडे होंगे. वो हाथ ठंडे ना हो, आप इसे आराम से वार्म करिए. Even if गर्मियाँ हैं, अगर आप वार्म हैंड्स लगाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा positive relaxation देता है to the patient. So warm it up and then nicely just do these kind of contractions. This is one. Second that you do is upper back. So you can just go for round circles. So again, rub it. आप उसमें देखिए upper back में आपका जो shoulder blade है उसके थोड़ा नीचे. Okay, so there's a bone there जो कि बहुत prominent है. So here is that bone. Blade से just mid of your जो आपका रिब केज है उसके मिड तक आपको एक बोन फील होगी. उसमें करते हुए वहां से यू कैन जस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ रिलैक्सेशन. नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको बटक्स का और सेक्रम का बताने जा रही हूँ, ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देता है क्योंकि आपका पेन ज्यादातर उसी एरिया में फील हो रहा है. एंड सेक्रल मसाज वर्क्स वंडर्स बिकॉज इट ऑल्सो स्टिमुलेट अ नर्व विच इज सप्लाइंग योर पेल्विक फ्लोर, जहां से बच्चा बाहर आने वाला है. और जो सेंसेशन वहां से है, तो आप जब इसको रिलैक्स करते हैं, सेक्रम में मसाज करते हैं, तो आपका पेल्विक फ्लोर जो है
जो नीचे की साइड होता है वो और ज्यादा रिलीज होता है। वो जितना ज्यादा रिलैक्स होगा उतना डायलेशन आपका बच्चा आसानी से नीचे आ पाएगा। तो इसलिए सेक्रल मसाज बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलती हूँ, स्पाउस को बोलती हूँ कि आप करें। इसके साथ साथ दिस फ्यू मोर मसाजेस जो हम अभी आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। So what you do again, make it like this. जो आपका सेक्रल एरिया है, जो बट का एरिया है, उसमें नाइसली यू कैन मेक स्मॉल सर्कल्स विद अ वेरी सॉफ्ट बट अ फर्म टच। द टच शुड रिमेन, आपका जो टच है वो कांस्टेंट फर्म प्रेशर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं आपने ज्यादा प्रेशर किया है, कभी आपने कम प्रेशर किया है। आपका जो प्रेशर है वो फर्म रहना चाहिए जब आप उसको कर रहे हैं। फर्म का मतलब सेम रहना चाहिए, हल्का सा दबा रहना चाहिए और एक सिमिलर पैटर्न ऑफ कंप्रेशन या प्रेशर रहना चाहिए। दूसरा बटक्स, बटक्स में अगेन आप सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे इन अराउंड द बटक्स जो एरियाज दिए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बैक एंड बटक मसाज, जिसमें आप पूरी बैक को अगेन डू इट लाइक दिस एंड यू विल जस्ट डू इट लाइक दिस। पूरी बैक में राउंड सर्कल्स। आप इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपने बट से लिया और एब्डोमेन जहाँ पे वो कर्व आ रहा है वहां से आपने वो लिया, फिर आपने ऊपर अपर बैक से towards the shoulder layer. So you can also divide your back into two segments, from butts to mid thigh, mid back, and then mid back to upper back to the neck. So दो segments में आप ऐसे कीजिए, butt से लेके जाइए जहाँ पे वो curve है वहां तक लेके जाइए, फिर उस curve वाले area से ऊपर लेके जाइए towards the neck. Coming on next, this is what I was talking about. This is called as a perineal massage. This massage is lovely and it actually helps in releasing oxytocin much more and endorphins much more. तो जैसे मैंने आपको breast massage बताया था, वैसे ही मैं अपने patients को perineal massage भी बताती हूँ। आप 2 fingers का आप thumb से मत कीजिए because the area is very soft. I don't want you to just press it. Keep it very soft and very, very gentle. So just go around the vaginal area. I actually don't suggest the spouse to actually dig in the vagina and then release it. No, you can go around the area and the inner thighs also, not just the perineal. You can also touch the inner thighs because even that is stimulatory to the muscle, to the pelvic floor. और आपकी जो inner thighs होती हैं उनमें से कुछ मसल्स अटैचमेंट भी वही आसपास है, आपके प्यूबिस में है, आपकी जो पेल्विक की जो बोन है उसके अंदर है। तो जब आप इन सारे एरियाज को रिलीज करते हैं, बेसिकली आप उन मसल्स को रिलीज कर रहे हैं। जितना आप मसल्स को रिलीज करेंगे बच्चे के लिए नीचे आना उतना ही आसान हो जाएगा। So this is what I suggest. Breast massage and perineal massage together help to release oxytocin more and more, and जितना ज़्यादा oxytocin release होगा उतना ही ज़्यादा आपकी body में contractions अच्छे होंगे, आपका labor period जल्दी आएगा, and this is what happens. So इसलिए आप ये दोनों ही massages, breast massage and perineal massage, वक्त से पहले ना करें। जब तक आपका full term नहीं हो जाता, that is 37th complete नहीं हो जाता, उसके बाद ही मैं पेशेंट्स को बोलती कि आप ये स्टार्ट कीजिए। उसके पहले मत कीजिए वरना आप अर्ली लेबर में चले जाएंगे और फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी। दैट विल नॉट बी गुड फॉर एवरीवन। Coming on next is positions in labor. So these are the positions which I usually suggest the mother. So what you can do is I'll just demonstrate some. मेरी आवाज अगर ना आए तो please let me know because I'm not having the mic today. It's not functional. तो आप ऐसे ball ले सकते हैं. This is also part of a rolling ball. And you can just lie down on this. Okay. Now make sure हम ये क्यों कर रहे हैं. We are doing it. Is my thing visible? So why am I doing this is because we want the baby to be down. So more we want the baby to be down, we are supposed to have this posture. Okay? जितना आपका posture ऐसे fit होगा, आपको उतना ज़्यादा बच्चा नीचे आने के लिए रहेगा because we're using simple fluid mechanics here. कि जब आपका बच्चा एक fluid के अंदर होता है, okay, that is all there inside your abdomen. Now what we do is when we try to
make the postures under gravity, the baby rotates, and then we can use it and get the baby out. So this is how we try to get the baby settled inside the pelvis. Trying to push it and go inside the pelvis. So one is this ball. You can also just use this ball to go for these kind of nice movements, which will again help the baby to come down. Other than this, what you can do is आप इस तरीके से लेट सकते हैं. You can lie down like this. So you can lie down like this. Now when you lie down like this, what's happening is your palm is up and your body is down. That is helping you to again get the baby in the position that they want. Right? Other than this, what you can do is you can hold, the husband can hold the mother, and you can also go for some kind of a squats, which are mentioned in the pictures. Okay. So these are the pictures. You can go in for leaning postures. आप टेबल पे, आप टेबल पे lean out कर सकते हो, chair पे lean out कर सकते हो. जो kneeling positions है. You can also stand like this. The husband can help the mother in giving a warm touch. You can also stand with one leg on the chair and one leg on the down and try and get the baby down. Basic idea is आप pelvis को जितना wide रखोगे और pelvis को जितना ही उस position में रखोगे जो कि gravity assistance के साथ बच्चे को नीचे लेके आ रहा है, that will help. Now I'll also like to add on some exercises, the ball exercises, which I suggest. Now what I want you to do, you can take a ball, depending upon your height, if you have a height maybe 65 centimeters to 75 centimeters usually happens. So it is a standard ball, everyone today has 5+, 5'3" or so. So you can just do that. So आप ये देख सकते हैं कि बॉल, मेरा बॉल थोड़ा सा डिफ्लेटेड है, कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेटेड ना हो. You can keep it medium. Now why I don't want it completely inflated, because as I said, आपका जितना ज़्यादा वो wobbly होगा, उतना ज़्यादा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो आपके चांस ऑफ फॉल बढ़ जाएगा. तो मैं थोड़ा सा डिफ्लेटेड करवा लेती हूँ. What I want you to do is these kind of a swinging movements. You are just going up and down like that. Okay. Now when you're doing, imagine something is there, it will constantly move like this. If my hands are the baby and the baby is settling in, this kind of jumping movements you're doing, such that the baby is going down, down and down. Imagine आपके पास कोई बॉटल है, उसके अंदर केचप नहीं निकलता, या कोई भी चीज आपको निकाली है और नहीं निकलती, what you shake it like this, right? Or you shake it like this, right? That is what we're going to do. Is now I'm going to just shake it like this. So just imagine if this hand is the baby. This is how it is moving. It will move like this, and then eventually it's going to go down, because it's creating a space, and that's how it is going down. So eventually this also helps. Now in this, I'm not asking you to do this. As of now, मैं आपको ये करने को नहीं बोल रही. मैं केवल आपको pelvic blocking सिखा रही हूँ. Right? So this is your one. You just keep swinging your pelvis to the sides. Next thing is forward and backwards. So in this, it is going like this. So आपने ये सारे movements करके किसी भी चीज को निकालना है, तो आपने ऐसे, ऐसे या फिर उसको shake करके निकाल दो. तो similar movements आप ऐसे कर रहे हो, such that the baby, we are trying to get it into the pelvis and bring it out. Right? So coming on next slides. So the husband can also hold it, and the lady can squat. जो आपकी squatting positions आप देख पा रहे हो, so उसमें आप पकड़ सकते हो, और बच्चे और जब मदर नीचे जाएंगी तो पैरों को जितना wide आप खोल सकते हो, उतना wide आपने खोलना है, and then you go down, right? That's how you go. Now coming on next is the breathing during the labor. This is what I was talking about. So breathing during the labor is something that is very very important. इसमें आपको एक constant जो breath है, जिसको हम cleansing breath कहते हैं, वो आपने ध्यान रखनी है. वो आपने कैसे लेनी है? Breathe in, so you can practice it. And sit and feel. आपका abdomen पे हाथ और एक इस पे हाथ. Breathe in, and as you breathe out, feel your abdomen. When you breathe out, it is going inwards, and when you breathe in, it is going outwards.
तो आपका चेस्ट भी फूलेगा, ये भी फूलेगा। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, दैट गिव्स यू अ गुड रिलैक्सेशन एंड इट इज सेड टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन कामिंग योर माइंड। तो जब भी आपको दर्द हो रहा है और आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, trust me, that helps to release your pain, whatever you're feeling, your mental status, your nerves, everything gets on a soothing process and you don't feel any discomforts. Now these are the things, breathing techniques I'm going to talk about. तो जब आप एक्टिव लेबर में हैं, जब आप फेज 1 में हैं, स्टेज 1 में हैं और आपको पेन रहा है, what you can do is you can breathe in. The contraction came, okay? Now when the contraction came, उस पीरियड में आप ही और हु साउंड निकाल सकते हो, and as the contraction goes down you can eventually relax and then breathe again. फिर next contraction आने से पहले take a deep breath and then as the breath is contraction is happening, आप उस पीरियड में ही हु and then relax. We'll do it. So imagine contraction is coming when I breathe. That's the initiation of contraction. When I'm doing he who, that is during the contraction. और जैसे जैसे मेरा he who sound नीचे जाता जा रहा है, इसका मतलब मेरा wave नीचे जाता जा रहा है, मेरा contraction कम होता जा रहा है और तब मैं दोबारा breathing. So it starts with आपने ब्रीदिंग किया, cleansing breath लिया, relax completely, then again take a breath and like that. So this is when you are into your active phase. Now as I told you, जब आप second stage में जाओगे, बच्चे को बाहर निकालना चाहते हो, तब आप किस टाइप की ब्रीदिंग करोगे। नाउ मैंने आपको पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन करने के मैं अभी आपको सिखाऊंगी। सो आप उस पीरियड में क्या करोगे, अपनी कोर मसल्स को टाइट करके पुश करोगे। आपकी जो अपनी लाइफ, जब आपको आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा, आप अपने पेट को जोर लगाते हो और फिर बच्चे को, फिर आप अपनी बॉडी को बाहर निकाल, स्टूल को बाहर निकालने का कोशिश करते हो। सिमिलर वे is what will happen in your baby when you are having something solid inside. You want to take it out. You squeeze your powerhouse. Your abdomen is the powerhouse of your body. Your core is the powerhouse of your body. आप उसको squeeze करोगे और फिर बच्चे को नीचे धक्का दोगे, like this. Then breathe out. That is cleansing breath. Then breathe in again. Now contraction is peak and you're supposed to push. Hold and push. Keep exhaling, okay, and keep squeezing. And then relax, okay. So there's a whole time there. Now when you hold, I am not asking you to hold the breath. If you hold the breath, you will end up in, not completely holding it. आप small exhalation कर सकते हो. So you do this. Push harder during this while you're holding and you're releasing slight air inside and then you completely exhale. जैसे जैसे contraction में आपने complete exhale कर दिया, तो वो जो period था hold का, उस पूरे period में आपने बच्चे को push किया है नीचे और फिर जैसे contraction खत्म हो गई आपने relax कर दिया। थकिए मत unnecessarily, just push करना है। आप scientific way में push कीजिए। आपका जो contraction है उस दौरान आपने अपनी बॉडी की मदद करनी है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी बॉडी कुछ करना चाह रही है, आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके उसकी केवल मदद करें और जब आपकी बॉडी थक गई है तो आपने छोड़ दिया। आप बाकी मसल्स का इस्तेमाल अगर हर वक्त ही करते रहेंगे कि बस बिना सोचे समझे करेंगे, आप अपनी एनर्जी खत्म करेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड आई रिपीट अगेन, आई डू नॉट वांट यू टू कोलैप्स। मैं नहीं चाहती आप हाइपर वेंटिलेशन में जाइए, आप थक जाइए, आपकी सांस फूलने लग जाए और फिर आपको दिक्कत हो, तो वो मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको रिलैक्स ब्रीथिंग टेक्निक समझा रही हूँ। ये आपने कहा, जब मैं एक मदर बनी थी, आई एम मदर ऑफ 10 years old, व्हेन आई वाज अ मदर, मेरे को ये समझाने के लिए कोई नहीं था। दैट taught me to help other mothers and I did this courses because as a physio भी हमें ये नहीं पता होता है। जब तक आप इसके साइंटिफिक चीजें करते हैं, आप पढ़ते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आती है। ये सब पढ़ा होता है लेकिन आपको और पढ़ना होता है ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। तो जो मेरे साथ मुझे दिक्कत हुई, आई हेल्प अदर मदर्स बिकॉज आई लिटरली कोलैप्स लाइक दैट मोना सेइंग, आई लिटरली कोलैप्स।
तो मुझसे नहीं हो रहा था बिकॉज मेरा बच्चा नीचे नहीं आ रहा था. सो आई वॉज लिटरली exhausted, completely exhausted because तब मैंने साइंटिफिक नहीं किया था. आई वॉज जस्ट रनिंग अराउंड द बुश बिकॉज मुझे पता था कि जब आता है तो बच्चे को पुश करना है. मुझे ये पता था कौन सी मसल का इस्तेमाल करना है, कोर मसल इस्तेमाल करिए, मुझे ये पता था. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको साइंटिफिकली ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके आप एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं. दिस विल सर्टेनली हेल्प यू do it like this. This will also help you ease your pains also. Now let's do some exercises. Before doing the exercises, I want you to know कि इससे फायदा क्या होगा. ये आपकी कमर के दर्द को बचाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपका माइंड रिलैक्स करता है. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप नहीं कर सकते. लाइक अगर आपको चेस्ट पेन्स है, आपको मसल वीकनेस है, अगर आपको एम्नियोटिक फ्लूइड का लीकेज है या एम्नियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, वो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें आप बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने फिजियो से पूछिए क्या आप एक्चुअली इसके लिए एक्सरसाइज के लिए एलिजिबल हैं. मैं हर मदर को, मेरे जितनी भी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं, मैं उन सबको बताती हूँ कि आपने एक्टिव फेज में एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, सेकेंड फेज में आपने क्या करना है. लेकिन एक्टिव फेज की एक्सरसाइजेस बताने के साथ साथ मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ, अगर आप उस पीरियड में डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि यस यू आर गुड टू गो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, केवल तभी आप करेंगे अगर आपका डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ आपको ये बोलता है, स्पेशली आपका डॉक्टर अगर आपको ये बोलता है कि यू आर नॉट फिट टू एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर एक्टिव फेज, प्लीज डू नॉट डू इट. बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज एक्सपर्ट हूँ बट वो मेडिकल एक्सपर्ट है, उनको आपकी बॉडी मुझसे बहुत ज्यादा पता है, तो आप उनके कहने पे जाइए. बट अगर वो आपको ये कहते हैं यस यू आर गुड टू गो, प्लीज एक्सरसाइज. दिस विल सर्टेनली हेल्प टू रिड्यूस योर लेबर पेन period and labor pain period less, that means labor pain management. And this exercises will also help to release endorphins. आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, डाइवर्ट होता है, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपका पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. Let's do some exercises. I've given you ball exercises. Now I'm going to give you two exercises. This is pelvic tilt, जो मैं इतनी देर से बात कर रही थी कि आप अपनी मसल्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. So I'm going to give you that. So what I want you to do, is आप ऐसे लेट जाओगे on the side on the bed, right? Then I want you to tuck your tummy and squeeze your bum. That's what you want. Squeeze it harder and relax. ये आप अभी से start कर सकते हो. Even if you're not into your 37th completion, आप स्टिल ये कर सकते हो ताकि उस दौरान आप तब तक आपकी मसल काफी स्ट्रेंथ हो जाएगी. सो व्हाट आई वांटेड टू इज टैकल tummy. नाउ कैसे होगा, एक जो आपका नाभि है उसको आपको अंदर और ऊपर की तरफ खींचना है. सैंडल के हिस्स में आपने अपने आपकी जो पेल्विस है वो इस तरीके से गेटों में तो इसे आर्च होती है. ये आर्च हमें फ्लैट करती है, पीठ से कमर से हमें बेड को दबाना है. दैट इज सेकंड जो मैं बोलती हूँ, that is cat and camel, which is again a very good exercise to get your baby down. Okay, what I want you to do, आप ऐसे फोन पे चले जाओगे, तो आपके बैक में ऐसे फॉलो होगा, आप इस तरह होंगे, देखा, hold, give it a good stretch. आपका pelvis इसमें move कर रहा है, both the pelvis moves, both is the flexible. Last but not the least, बहुत सारी exercises हैं, but what I'm giving you are the basic ones. So what I tell the mothers is, आप पैर ऊपर चौड़े खोलिए, right? Then you go down and make yourself in this position. Okay, sit straight. This is the first one. That's what I want you to do. Now, what happens in this is आप spacing create कर रहे हो अपनी pelvis में. You're creating the space and you're trying to get the baby out. So when you sit like this, as given in picture 1, when you try and sit like this, that helps you to get the baby out. मतलब अगर आप देखो तो वो वाइड खोला हुआ है उसने, so जितना ज्यादा उसने वाइड खोला हुआ है उसने बच्चे के लिए स्पेस क्रिएट किया है. अब जो वो ऐसे बैठ रही है, so she is taking the baby out. So it is under gravity she is pulling it. And trust me, there was a mother of mine जो नहीं निकाल पा रही थी.
She came up to me with a severe back pain, like she couldn't even turn, she couldn't even sit for long. So she had lots of issues. वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बहुत सारी दिक्कत थी. बट हमने उसका बैक पेन तो कंट्रोल किया. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग लॉकडाउन फेजेस, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी. I'm still taking online classes. So I used to take online classes, and through online classes, not even using my manual therapy, I helped the mother get rid of the back pain. उसके बाद she was having a difficulty to actually getting the baby down. उसका dilation एक लेवल तक हुआ था, उसके बाद नहीं हो रहा था. तो मैंने उसको ये एक्सरसाइजेस बताई थी, but she was very diligently following it. And she actually helped herself. She sat in this position, and when she sat in this position for some time, she actually got into the crowning of the head. I'm not telling you to do it without asking the gynecologist if she suggests or anything. You do exercise. तभी आप exercise करोगे जब आपकी गायनी आपको बोलेंगे कि आप fit है ड्यूरिंग द लेबर करने के लिए. वो इस पोजीशन में बैठ गई थी और ग्रेविटी के पुल से उन्होंने बच्चे को नीचे लेके आया था. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक्सरसाइजेज इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है. अगर आप ध्यान से करेंगे और साइंटिफिक वे में करेंगे, यू कैन सर्टेनली हेल्प योरसेल्फ. I think I'm ending up my session. So this is a voucher from Life and Pursuits. You get some discounts, so you can connect Cordlife, how you can register into it, and how you can avail these discounts. Thank you so much. I am available online for any kind of consultations if you require, especially if you need help in normal deliveries and exercises. I can certainly help you out for sure. I think I would like to. Thank you, ma'am. We can end the session here then. Yeah. How do I end this thing? Is it still showing? No, ma'am. Your presentation is off. Your screen is only visible, ma'am. We are ending the session, then it will be invisible. Okay. So do we? Yeah. Please end that. If you can just do it from my behalf. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Just be the organizer. And then I think all of you, if you have any questions, you can just post us. And we'll just take up the questions now. Can you help me? How can I stop sharing? Okay, I think we can take questions. I can see ma'am. Okay. Hi, ma'am. Very nice session, very nice demonstration. Foods to include in diet for last month for normal delivery. Ma'am, would you like to answer this? I'm usually not in favor of restricting food or allowing some food. I usually prefer कि आपको जो खाना है खाओ, बस आप लोटे मत हो. There's nothing, I feel there's nothing as such would increase your chances of normal. बहुत लोग आते हैं पूछते हैं घी खाना है, कैस्टर ऑयल पीना है, उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, या कुछ या ये खाने से बच्चा गोरा होगा, ये खाने से बच्चे के बाल आ जाएंगे. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है. बहुत पेशेंट्स ने बहुत करके देख लिया, जिसका जो होना है होता है. So I am not in a particular favor of some food, but yes, always have a good protein-rich diet throughout your pregnancy and have a very balanced diet. So I absolutely agree on this. So 1 second. I think I have a few more questions. I'm so sorry. मुझे नहीं पता था कि मैं इंग्लिश में बोल रही थी ज़्यादा. I'm so sorry. I hope I was understood by all. Your presentation is perfect. Thank you so much. So there is another question. I have a Carpenter Syndrome. So this is asked by Bunty. I say 1 second. So somebody is asking me about carpal tunnel syndrome. So yes, this carpal tunnel syndrome can be easily cured. So what happens is you have this musculature here all tight in the arms, right? Now here there's a nerve that is passing by and it is supplying all your hands. तो जब भी आपकी ये नर्व कम यहाँ से सुपरफिशियल है, जब वो यहाँ पे कंप्रेस होती है, तब आपको हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है. That's why it gets into pain. So what you can do is easy exercise. You can just stretch your arm like this and just try and do it like this. तो जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका जो मसल है that will just go into stretch and ये जो nerve है वो compression से बच जाएगा
आप स्टिल एक फिजियो कनेक्ट कर सकते हो या अपने एंटीनेटल केयर प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते हैं. शी इज एंटीनेटल स्पेशलिस्ट. शी विल हेल्प यू रिलीज ऑल दीज मसल्स ऑफ द फेशिया. आपका यहाँ का जब सारा मसल रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. आपको ऑपरेट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. समटाइम्स इन कार्पल टनल आई सीव फीमेल्स with carpal tunnel syndrome just through exercises. So I think I have another question here. Somebody can help me with the questions. I think I'm getting some issues in. Yeah, I got it. Okay, so I am in 8th month. What exercises would you suggest now and going forward? Okay, so Miss Romi, you are into 8th month. I am actually not. I'm very sure about your physical health. I think your doctor can tell you better. Are you fit to exercise? But in case you're fit to exercise, what I usually suggest, जो मैं suggest करती हूँ, वो usually आपका squatting होता है. इस time पे आप 8 में पहुँच गए. आप जितना ज़्यादा squat करेंगे, आप जितना ज़्यादा pelvic exercises करेंगे, जो मैंने आपको जो आसन अभी बताया था, मलासन, आप इस तरीके के पोस्चर्स में बैठेंगे तो आप अपने आप को मदद दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस. और जो मैंने आपको लेबर की जो पोजीशंस बताई थी, आप उन पोजीशंस को भी फॉलो कर सकते हैं. जो मैंने आपको वॉल एक्सरसाइज बताई थी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. इवन दैट कैन सर्टेनली हेल्प यू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम. Can we do exercise in low-lying placenta? Ma'am, would you like to answer this? Can be different types of low lying placenta. So there are some which are low lying, but they're still away from the mouth of the uterus, which is called os. So अगर वो थोड़ा away होता है, I think you can do mild exercises. But एकदम भी अगर low lying है, os पे है, तो we would like you to avoid exercises. In fact, कभी-कभी bed rest भी बोला जाता है. So it really depends on your doctor's discretion the type of low lying placenta you have. So I think, ma'am, this also happens sometimes कि when people usually go in the first ultrasound, वो कई बार low lying आता है, but जब second या third चला जाता है, तो अगर आपका low lying placenta initial stages में है, तो आप definitely हम आपको केवल bed breathing exercises आप कर सकते हो. उससे ज़्यादा जो भी weight bearing exercises है, वो नहीं आप कर सकते. But जैसे जैसे आपका placenta ऊपर चला जाता है, usually second, as you enter the second trimester, वो usually चला जाता है. तब you fit to exercise, but low lying, I think, ma'am, we should not be doing gravity, assisted exercise. So, ma'am, this is for you. Minimum fluid index for normal delivery. So there's no particular minimum fluid index for normal delivery. Basically, your water level should be good. The baby should not be in stress. We have delivered few patients normally जिनका fluid index थोड़ा borderline भी होता है. So I guess अगर total fluid index माना जाए तो 7 centimeter, 6-7 centimeter should be the minimum index for normal delivery. बहुत high, बहुत ज़्यादा fluid भी नहीं होना चाहिए. That also sometimes happens in normal delivery. So yes, I would like to stick with 6 or 7 centimeter total for normal delivery. Lovely. Ma'am, this is another one, hemorrhoids remedy for last month. So basically hemorrhoids का ध्यान आपके डॉक्टर आपको बताएंगे. शुरू से पेशेंट को बोलना चाहिए रखने का कि you should avoid constipation completely since the start of the pregnancy. Hemorrhoids जो है वो gradually develop होते हैं, they will not develop suddenly. But ये है कि आपको feel होता है, आपको problem होती है in the last few months when the weight of the baby increases, when the pressure on the hemorrhoids increases, थोड़ा pain होने लगता है. Last few months में constipation. Actually first trimester and last trimester में सबसे ज़्यादा constipation होता है. So that is the time जब आपको ये hemorrhoids feel होने लगते हैं. So first of the foremost thing, पानी पीना है, have a high roughage diet, have good water, include lots of salads and green leafy vegetables. That is to avoid constipation. Constipation बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो आप रोज एक इसबगोल या any constipation relieving फिर आप ये सब ले सकते हैं, but completely avoid constipation so that आपको hemorrhoids होए ना. In case अगर आपको हो गए हैं तो few ointments available, we cannot give you a lot of antibiotics during that time. So yes, few ointments which are available which should help you.
और कोई चीज अगर आपने इसको शुरू से कंट्रोल नहीं किया है या पहले से ठीक नहीं किया है, तो गुड चांस कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए पुश करें तब वो थोड़ा बढ़ जाए और उसके बाद आपको और ज्यादा पेन करें। तो द बेस्ट रेमेडी फॉर हेमोरॉइड्स वुड बी उसको होने ही नहीं देना, प्रिवेंशन rather constipation. Yes. Thank you so much, ma'am. I'm 36. Okay. So this is I'm 36 week pregnant. How many squats should I do and how much walk should I do? My doctor says I'm fit to exercise. Okay, so prediction 36 week pregnant. So you can do squats. What I usually suggest is just exercise start करें तो it is always has a grading. So you cannot do all of a sudden. You start with 10 to 20. You can go as far as 100. You can even do more. It all depends upon your stamina. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टेमिना कितना है, आपके लोअर लिम्स में स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसा ना हो कि आप स्क्वाट्स करे जा रही हैं और उसके बाद आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने लेग्स को भी स्ट्रेंथन कीजिए एंड इवेंचुअली यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट स्क्वाटिंग। Walk, yes, you can do as much as you want. There is no restriction as such. The only criteria which we say during your, this period is just that आपको थकना नहीं है. You don't have to get into any kind of fatigue. So that is what I usually suggest. You don't have to get into any fatigue. अगर आपका stamina level अच्छा है, so you can exercise, especially during morning exercise and after you have your dinner. उसके बाद का हम walking जरूर बोलते हैं. 45 minutes walk is what we usually suggest. Next question is from Mrs. Jindal, and she's asking us, I am in my 8th month. How do I ensure proper lactation after my child's birth? I've heard of cases where supplements were given to baby, which I do not want with my child. Would you like to put some light on this? I think a proper diet, a good shape of nipples, and a timely feeding, sucking and feeding ensures good lactation. Yes, I think Dr. Mandakini should put some light because she's a lactational counselor. She's a better person. Surely, ma'am. Actually, what happened is so there are certain females who come up to me and they say कि हम lactation बढ़ाने के लिए दवाई ले रहे हैं, supplements ले रहे हैं. So what I usually suggest is, when you are taking lactation, you don't need any kind of supplements for even enhancing your breastfeed. आपका breastfeed एक natural process है. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका बच्चा लैच प्रॉपर्ली कर रहा है. तो गुड लैचमेंट इज कि आपका जो ब्लैक एरिया होता है अराउंड जो आपका निपल है और जो ब्लैक एरिया होता है, तो पूरा ब्लैक एरिया उसके मुंह के अंदर होना चाहिए. लाइक इट इज ऑल mouth is wide open and that's how the baby is kept in your breast inside the area, black area inside. जितना ज्यादा वो उसको सर्व करेगा उतना अच्छा आपका लैक्टेशन होगा. यूजुअली मदर्स जो सफर करती है वो केवल निपल के एरिया को फीड कराती है, फिर उनको लगता है कि हमारा मिल्क नहीं निकलता. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप चाहे प्रीमेच्योर बर्थिंग दें चाहे आप मेच्योर बर्थिंग दें, आपका मिल्क इवन उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक मेच्योर बर्थ और प्रीमेच्योर बर्थ की जो मिल्क कंसिस्टेंसी है वो तक डिफरेंट होती है. दैट इज हाउ नेचर इज. एंड नेक्स्ट थिंग व्हिच आई लाइक टू ऐड ऑन इज, अगर आप नाइट फीड बढ़ाएंगी, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, इट इज ऑल द गेम ऑफ हार्मोन. जैसे मैंने कहा, ऑक्सीटोसिन आपको कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, ऑक्सीटोसिन आपको ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकालने के लिए भी चाहिए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ योर ब्रेस्ट मिल्क. There's another hormone which is required for the production of breast milk, which is prolactin. Both of these hormones are only stimulated when the baby is sucking over your breast. If the baby is not doing that, तो नहीं होगा. तो इसलिए फीडिंग जरूर कराइए. और वो आप अगर सिजेरियन होता है या नॉर्मल होता है, 1 घंटे के अंदर जब आपने डिलीवरी कराई है उसके 1 घंटे का पीरियड हम बोलते हैं बहुत अच्छा पीरियड है. उसमें बच्चा बड़ी आसानी से लैच कर जाता है. एंड दैट पीरियड should be utilized and you should feed within 1 hour of your delivery. You will never face any issues. Rest, try to give night feeds more. आपको definitely जरूरत नहीं पड़ेगी. Even मैं supplements या over top feed नहीं देना पसंद करती हूँ. मेरी मदर मुझसे करेक्ट करती है. How do you control blood sugar in last? Ma'am, please help us out in this.
How to control blood sugar in last month? Why does everybody want to control humoral blood sugar in the last trimester? Started from the first trimester only. सॉरी ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए प्लीज आपकी शुगर या डाइट शुड बी प्रॉपर डेफिनेटली वेट मेंटेनेंस has to be good and a lot of it depends on your hereditary also the parents ko or आपके grandparents को sugar है तो you have to be more careful. Sometimes you may experience some high blood sugar values when you are when you already have PCOD or you are on the higher side of the weight. So especially in these cases, हम शुरू से ही so there are certain values categories like I told you, hereditary, high weight, obesity, history of PCOD, and there are few races जिसमें होता है blood sugars हम होते हैं उनमें से हम शुरू से careful होने का try करते हैं कि keep on testing them. We are after their lives कि आपकी sugar बढ़ी हुई नहीं हो. So yes, this is how you control the blood sugar. You cannot suddenly control your blood sugar in the last trimester. You have to start with it since the start of your pregnancy. Sachin ji, good Yeah, morning. ma'am. Basically, some rituals is going on, so I'm a little bit occupied right now. Okay, I think there's a last question here. Does castor oil or ghee smoothens normal delivery? After this question. So this is a big myth that we need to have greasy materials in order to get normal delivery. That's not the case. Absolutely not the case. आपको चाहे जितना घी खा लीजिए चाहे जितना वो कर लीजिए आपका जो घी है वो आपके पेट में जा रहा है वो वहां नीचे नहीं जा रहा है जहां से बच्चा बाहर निकलेगा तो घी का कोई रोल नहीं है आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी जितने ज्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगी जितने ज्यादा आप अपने हार्मोन जैसे मैंने कहा जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं जब आप वो करते हैं उस पीरियड में आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी सो ट्राई एंड एक्सरसाइज मोर कीप योरसेल्फ फ्लेक्सिबल मोर ट्राई टू मूव योर पेल्विस लेट द पेल्विस एक्सपैंड जितना आपका पेल्विस एक्सपैंड करेगा जितनी आप स्ट्रेचेस करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच है स्क्वाट्स है जितना आप करेंगे उतनी जल्दी आप नॉर्मल डिलीवरी डेवलप कर सकते हैं मैंने भी बहुत सारा घी खाया था मुझे भी खिलाया गया था बट ये एक मिथ होती है और ऐसा कुछ नहीं होता है बट हमें बड़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए करना पड़ता है बट उनको बोलिए अगर आप वो खाएंगी तो आपकी सेहत खराब होगी तो प्लीज मत खाइए मैं एक पॉइंट उधर भी ऐड करना चाहूंगी जिन्होंने बोला कि ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड शुगर आप कंट्रोल कर सकती हैं एक अच्छी एक्सरसाइज से एक अच्छी डाइट से सो आप अपने हमने किया है देयर वाज अ लेडी व्हिच वाज 120 kgs एंड शी वाज having diabetes and she was having thyroid and just through exercises we were able to control her diabetes as well as maintain the weight so it is very very important that you have good diet and good exercise and of course proper medications you can certainly get rid of all these problems I think we should wind it up we don't have much questions Sachin would you like to speak something on STEM banking Yeah, ma'am. Basically, I just highlight some few points. Basically, first of all, STEM is really once in a lifetime opportunity, जो सिर्फ डिलीवरी के वक्त आती है. And right now, more than 80 plus life-threatening disease that can be cured and covered with the help of stem cell therapy. चूंकि ये जो कंसेप्ट है डिलीवरी के 10 मिनट्स के दौरान आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी करेक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड बोथ हम लोग कलेक्ट करते हैं ब्लड और कॉर्ड से रिलेटेड जो ऑर्गन मसल बोन्स और जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं था उन डिजीज का ट्रीटमेंट आज के टाइम में स्टेम सेल से पॉसिबल है और हम लोग ये कौन कौन सी स्टेम सेल फैमिली मेंबर्स में कौन कौन सी डिजीज में कैसे काम आ सकते हैं किस किस के काम नहीं आ सकते हैं उसके लिए हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं आप लोग के अकॉर्डिंगली कि स्टेम सेल्स के यूजेस क्या है हम लोग कितने ईयर्स के लिए इसको प्रिजर्व करते हैं क्योंकि इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एज पर द साइंस जब किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रायो प्रिजर्व किया जाता है तो सैंपल बिकम इनटू द इमॉर्टल फॉर्म इट कैन बी फॉर n नंबर्स ऑफ ईयर्स इसके अलावा
रिसेंटली अभी एक नया अपडेशन मैं देना चाहूंगा। कोविड-19 में अभी रिसेंटली यूएस एफडीए ने जो अनबालिकल कॉर्ड में से हम लोग जो मीजल कैम स्टेम से निकालते हैं, डॉक्टर सोनम मैम रिसेंटली भी नया अपडेशन आया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट ने बेसिकली इससे डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यूनिटी जहाँ पे डाउन हो जाती है, वहां पे 40 पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे इन इटली, बट वहां पे चूंकि गवर्नमेंट रूल है कि अगर आप स्टेम से प्रिजर्व नहीं कराते हैं तो वो पब्लिक बैंकिंग में डोनेट हो जाता है। वहां पे काफी सारी पब्लिक बैंकिंग में स्टेम सेल स्टोर थे, तो वहां पे मीजल स्टेम सेल की हेल्प से कोविड-19 पेशेंट में ट्रीटमेंट किया गया, जहां पे उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे थे वो वेंटिलेटर के बाहर आए। तो रिसेंटली नई स्टडी आई है यूएस एफडीए के थ्रू। तो दैट मीन्स कि नाउ जैसे जैसे इसके यूजेस बढ़ रहे हैं, इसके अपडेशन बढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग ऑलरेडी स्टेम सेल बैंकिंग में करीब लाइक 20-30 ईयर से इस पे रिसर्च चल ही रहा है। 2008 में खाली 5 डिजीज हुआ करती थी जो कि यूएस एफडीए अप्रूव थी। आज 85 प्लस ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें यूएस एफडीए इसको अप्रूव कर चुका है, जहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी यूज में आ रही है। रिसेंटली एमपी में बहुत जल्दी भोपाल एम्स में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेंटर ओपन होने जा रहा है, वेरी रिसेंटली मैम। इट्स अ न्यू अपडेशन, राइट। सो बेसिकली हमारे सारे नंबर्स आपको जितने भी अटेंडी जिन्होंने अटेंड किया है, हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है आप हमें डायरेक्टली कॉल करके या अपना इन्विटेशन देके हम लोग सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्पेशली डॉक्टर सोनम बख्शी मैम टू गिव मी वैल्यूएबल टाइम एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पर्यूषण पर्व इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन। तो बेसिकली इंदौर इज अ सिटी ऑफ रिचुअल, यू नो, यहाँ पे हर सब तरह के फेस्टिवल्स इंदौर में मनाए जाते हैं एंड यहाँ पे राइट, सो दैट्स व्हाई ऐसी बिजी शेड्यूल में भी आप लोगों ने टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम सोनम बख्शी मैम। There's a question for you, Rajesh. There's a question for you. Is Cordlife and LifeCell are different companies? Of course, it's different company. LifeCell basically dealing in the community banking where your sample donate after 2 years, and Cordlife is a hardcore private banking. यहाँ पे आपके सैंपल पे राइट सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है। And the major difference, LifeCell basically preserve cord blood only, not cord. अनबालिकल cord वो preserve नहीं करते, and Cordlife is the only one company blood as well as cord दोनों। This is the difference. Last, can we take on this last? It looks like important. One more query regarding intake of progesterone. A doctor suggested after 3 months, we just SR 300 continuing till then. Would you like to say this to this patient, I think? Or I think this is a very this question. I mean, I cannot answer this question. I don't know the patient's history. Plus, the patient's own doctor or the patient should decide it with the doctor. Usually, we also give the progesterone beyond 3 months to some patients, but उसकी history रहती है या उसकी need रहती है. So it's a difficult question for me to answer on this online platform. I think that ends up. Sachin, we can end up, I guess. Thank you so much. Thank you, Sachin. Thank you, Dr. Mandakini. Thank you so much. Yeah, bye. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cordlife. One chance, one choice.